And I think all of us will process the information and come to terms with Bhante's death in our own way. Some friends have sent me emails saying that they're very, very sad. And some said they're quite happy because they're thinking about all that Bhante achieved. So we shouldn't just think that the funeral's taking place in the UK. There's celebrations and pujas and meditation taking place all around the world. And in the UK, one of the most famous Triratna writers is Maitreyi Bandhu. I think a lot of you have heard of him. He's a man who's also a brilliant poet. And when he wants to be, he can be very funny. So he's written a special puja for Bhante Sangharakshita on the occasion of Bhante's death. It's in 7 verses, 7 sections. And it's got a few similarities to our satsang puja that we all love. So it's also very different. So I took this beautifully written piece of poetry that's a puja, made it slightly simpler and gave it to my dear friend Bhadra. And we're going to use it at the end of the afternoon or evening as our puja. But first of all, I'm going to ask Bhadra to read it through. जब हम सोचते हैं कि गुरु के बगैर हमारा जीवन कैसे होता, वहाँ संभ्रम, वहाँ दुख। आपने जो सब कुछ हमें दिया है उसे सोचते हैं तो स्वयं को हम भाग्यशाली
हमें सिखाया। मैं गलतियां करता हूँ और मुझे अभी और बहुत सीखना है। कई बार मैंने मूर्खता और अज्ञानता की, घमंडी और निर्दयी रहा, भ्रम में गुमराह। बुद्ध के सामने वंदन कर मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। पवित्र मंत्र का पठन कर मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। शांतता पूर्वक ध्यान करके मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। मैं यह सब आपके साथ करता हूँ, मेरे गुरु और कल्याणी। तृतीय अंग क्षमाया। यदि काया वाणी या मन से मैंने आपको आहत किया, कृपया मुझे माफ करें। यदि मैं विश्वासघाती, कृतज्ञ, अहंकारी या बेपरवाह रहा हूँ, यदि मैंने आपकी शिक्षा को समझने में गलती की, यदि मैं आपको ग्रहणशील नहीं था, यदि मैंने आलस किया, लौकिक या निर्दयी हुआ, कृपया मुझे माफ करें। बुद्ध के सामने वंदन कर मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। पवित्र मंत्रों का पठन कर मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। शांतता पूर्वक ध्यान करके मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। यह सब आपके साथ करता हूँ, मेरे गुरु और कल्याणी। चौथा है पुण्यानुमोदन। आज इसी स्थान पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, उर्जयन संघरक्षित। आपके 4 अमूल्य उपहारों के कमल पुष्प, सुवर्ण जार, चरवाहों का गोलाकार नृत्य, निर्जन प्रदेश में बनाए हुए आज इसी स्थान पर उसे स्वीकारने की मेरी हिम्मत। पांचवा अंग पुनः समर्पण। जगत को बुद्ध की दृष्टि की जरूरत है। इसे बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत है। इसे शिष्यों के संग की जरूरत है। बेमिसाल गुरु और कल्याणी बुद्धत्व के मार्गदर्शक, धम्म के विविध मार्ग के धम्मानुदेश, संघ के संरक्षक, सुस्पष्ट चिंतन के प्रतिरूप, करुणा का साकार रूप, संपूर्ण निष्ठा से, परिपूर्णता से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। बारंबार पुण्यानुमोदन करते हैं उन सब के लिए जो आपने हमें दिया। इस गम और वियोग के समय मैं स्वयं को त्रिविध मार्ग को पुनः समर्पित करता हूँ। छठा अंग वफादारी। मैं सदा वफादार और कृतज्ञ रहूं, परिश्रमी और दयालु रहूं। मैं सदा आपके पुण्य का अनुमोदन करूं और मैं सदा आपके शब्दों का अध्ययन करूं, आपके स्मृतियों को मन में रखूं। हम सब आपको अपने सिर के ऊपर रखें। हम आपको अपने दिल में रखें और इस तरह इस जीवन में हम कभी जुदा ना हो। आने वाले जन्मों में हम फिर मिलें। हमारे गुरुओं और मित्रों के बीच हमारा जन्म हो। आपके साथ हमारे बेमिसाल गुरु और कल्याण मित्र उर्जयन संघरक्षित हम अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य में मिले। सातवां अंग हमारे मृत्यु के स्वयं
समय, मृत्यु के क्षण हमारे मन में त्रिरत्न रहे। हमारे बेमिसाल गुरु आपको हृदय में धारण करें। जिसे भी हमने दुख दिया है उससे हम माफी मांग सकते। हमें जो भी दिया गया है उसका पुण्यानुमोदन कर सके। हमारे मित्रों को धन्यवाद दे सके। बुद्ध के सामने वंदन कर मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। पवित्र मंत्रों का पठन कर मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। शांततापूर्वक ध्यान करके मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। मैं यह सब आपके साथ करता हूँ, मेरे गुरु और कल्याणी। So this is the puja we're going to do tonight together. तो आज यह जो पूजा है हम करने वाले हैं। In time it might be replaced by other Sangharakshita pujas. हो सकता है कि आने वाले समय में भंते संघरक्षित की पूजा करके ये लागू यानी हम इसे करना शुरू कर दें। But on this occasion, there's nowhere I'd rather be doing this puja than in Nagpur. There's nowhere I'd rather do this puja than here in Nagpur. और आज जो है ये जो पूजा है मैं किसी और जगह नहीं तो नागपुर में कर रहा हूँ। And there's nowhere in Nagpur I'd rather do this puja than in the Buddhist Shirya Vihar. और नागपुर में किसी और जगह नहीं तो ये पूजा मैं बुद्ध सूर्य विहार में कर रहा हूँ। And there's nobody that I'd rather do it with than you. और मैं किसी और के साथ नहीं तो मैं आप लोगों के साथ में मिलकर ये करने वाला हूँ। Now we've just heard the puja, it might seem very straightforward. तो हमने अभी पूजा सुनी है, लगता है कि ये बहुत ही सरल है, सीधी है। But there are quite a lot of things that are worthy of clarification. लेकिन पूजा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। And for the last couple of days, the Dhammacharinis and I have been going through with it. और पिछले 2 दिन धम्मचारिणियाँ और मैं इस पूजा को हम सीख रहे थे, इससे देख रहे थे इसे। And on the 24th and 25th of October this month, November, this month, in Aryaloka, we'll do it with the Dhammacharis. और आज 24 और 25 यानी इस महीने के 24 और 25 तारीख को जब आर्यलोक में धम्मचारी अभ्यास करेंगे उस वक्त भी हम इस पूजा का अभ्यास करेंगे। But I'll just mention a few points of clarification now. लेकिन आज स्पष्टता करने के लिए मैं कुछ मुद्दे बताना चाहता हूँ। The second verse talks about asking Bhante, asking Sangharakshita for forgiveness. दूसरा जो अंग है उसमें हम भंते जी को हमें माफ करने के लिए हम बोल रहे हैं। We shouldn't think that Sangharakshita would hold a grudge against us for anything we did until we've asked for forgiveness. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भंते जी हमारे से नाराज हो गए, उन्होंने अपने मन में कुछ कटुभाव हमारे प्रति रखे होंगे और जब तक हम उनसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक भंते जी हमें माफ नहीं करेंगे। We all know the third verse of the Dhammapada. It says something like, if you keep thinking thoughts about how someone's hurt you, you'll continue to feel ill will. जैसे धम्मपद में कहा गया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो अगर ऐसा हम बार-बार सोचते हैं तो उससे हमें दुख होता है। If you let go of your grudges, the ill will disappear. और यदि आपके मन में जो आपने अभी बनाई रखी है, अगर उसे आप छोड़ देते हैं, तो आपका द्वेष जो है वो नष्ट हो जाता है। Sangharakshita never had any grudges. और संघरक्षित के मन में कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं थी। I was talking with his close companion Paramartha. They'd been so much together for so many years. मैं उनके बहुत ही करीबी जो मित्र है ब्रह्मचारी परमार्थ, उनसे बात कर रहा था। परमार्थ काफी सालों तक भंते जी के काफी करीब रहे। And Paramartha loved Sangharakshita very much. और परमार्थ जो है भंते जी से बहुत प्यार करते हैं। And I said, what's it like living with him? और मैंने कहा कि भंते जी के साथ रहना कैसा अनुभव है? He said, quite odd. He said, it's like a light bulb that never goes out because he's got so much mindfulness. और उन्होंने कहा कि भंते जी की जो स्मृति है, वो हमेशा जागरूक रहती है। But he said,
in all these years, I've never heard him slander a single person. और परमात्मा ने कहा कि इतने साल उनके साथ रहा, लेकिन भंते जी ने किसी भी व्यक्ति के साथ में कभी भी किसी कटु शब्द का उच्चारण नहीं किया. I tell you a little story that affected me, and it's about how Bhante just is so forgiving. और एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ जो मुझसे संबंधित है और भंते किस तरह से लोगों को माफ करते हैं उससे संबंधित. So when I was a young order member, I was just living in a city alone, and I was trying to start a centre. मैं जब युवा कर्मचारी था उस शहर में मैं अकेला ही था और वहाँ पर एक तरह से केंद्र के निर्माण करने के लिए प्रयास कर रहा था. But of course we had no ordination process, and there wasn't much, there was no depth of experience in Wellington. और मेरे लिए में कोई शरण गमन प्रक्रिया नहीं थी, मेरा अनुभव भी उतना गहरा नहीं था. So anybody who was keen, they left. They left. और कुछ लोग बहुत ही प्रामाणिकता से आए थे, लेकिन वो बने नहीं रह सके, उन्होंने वो छोड़कर चले गए. And Bhante Sangharakshita seemed to be encouraging people to leave. To leave Wellington. He was encouraging them. और भंते संघर्षित जी लोगों को प्रेरित करते थे कि आप वेलिंगटन से को छोड़ दो, वेलिंगटन से निकल जाओ. So after some years I started to get angry. I felt that I was working hard and getting nowhere because the young ones were all leaving. और कुछ दिनों बाद में मुझे मैं क्रोधित होने लगा कि मैं लोगों को तैयार करता हूँ, जो भी युवा होते हैं मुझे उन्हें प्रेरित करते कि आप वेलिंगटन छोड़कर चले गए. So after a year or over about 1 or 2 years, I wrote him a lot of very angry letters. तो लगभग 1-2 साल तक मैं भंते जी को पत्र लिखता था, काफी गुस्से में लिखता था. And I realized my mistake. और फिर मुझे मेरी जो गलती है उसका एहसास हुआ. So I wrote him one more letter. I said, I know I've been very bad, and you probably have a very bad opinion of me. तो मैंने फिर भंते जी को पत्र लिखा था कि भंते जी मैं आपको बहुत ही गलत तरीके से खत लिखता था और हो सकता है कि आपके मन में मेरे प्रति एक गलत भावना निर्माण हुई. I don't think you like me now. अब मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो. And you've probably told a lot of other people that I'm not a good person. और हो सकता है कि आपने भी कई लोगों को बताया होगा कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ. But anyway, I'm sorry. क्योंकि मैं आपसे माफी मांगता हूँ. And I'm almost cried to say this. I immediately got a reply. और ये बोलते हुए मैं गुस्सा हो गया, मैं रोने लगा और तुरंत ही भंते जी ने मुझे उसका उत्तर दिया. He said, never for a moment was there any loss of affection in my heart. और भंते जी ने कहा कि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में कभी भी मन से मैंने कभी भी आपको दूर नहीं किया. And of course I would never say anything bad about you. और निश्चित ही मैंने किसी को भी आपके बारे में कभी कोई बुरा नहीं कहा. So what this verse of the puja is really getting at is that if we feel we've got something to confess, especially something in relation to Sangharakshita, it's good to feel sorry and at least voice it. और इसलिए जो दूसरा अंग है कि ऐसी कुछ बात जो भंते जी के प्रति हमारे मन में हमने रखी है, जो हमें अभी व्यक्त कर देनी चाहिए ताकि हम मुक्त हो जाए, तो हम इसलिए वो कर सकते. You may not have written a whole series of angry letters to him. हो सकता है कि आपने भंते जी को बहुत सारे गुस्से में खत नहीं लिखे होंगे. But perhaps you said some bad things about him to someone else. हो सकता है कि उनके बारे में आपने किसी से कुछ बातें कही हुई. Perhaps through your egotistical thinking you caused some trouble in the Sangha. हो सकता है कि आपके विचार की वजह से संघ में कुछ समस्याएं निर्माण होंगी. So you've got something to apologize for. और उसी वजह से हमने वहाँ पर माफी मांगनी चाहिए. I'll just mention one other example of how this puja needs a bit of clarification. और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इस पूजा के स्पष्टीकरण के लिए. It talks of Sangharakshita, Bhante Sangharakshita, as being a great translator. पूजा में कहा गया है कि भंते संघर्षित एक बहुत बड़े अनुवादक है. Well, in the literal sense of translating, taking sentences and ideas from one language and putting it into another language, he didn't do very much. तो अगर हम उनको बोलते हैं मान जैसे या अनुवादक, तो एक भाषा से कुछ लेकर उन्होंने दूसरी भाषा में लिखा, ऐसा भंते जी ने नहीं किया. He produced an English version of the Dhammapada भंते जी ने धम्मपद का अंग्रेजी अनुवाद किया
with the help of a friend, he put into, I think, English, a Tibetan meditation practice. और उनके मित्र के साथ में उन्होंने तिब्बतन मेडिटेशन प्रैक्टिस है उसको अंग्रेजी में लिखा. But when it talks about being a translator, it means something much, much deeper and more spiritual. और जब हम यहाँ अनुवाद करके जब कहते हैं तो वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही उसका आध्यात्मिक अर्थ है. We can go into this when we study it in the Order workshop. और जब हम ब्रह्मचर्य का वर्कशॉप लेंगे तो वहाँ पर इसको हम और गहराई से देखेंगे. But it really means he immersed himself in the depth of Buddha wisdom. लेकिन हम देखें कि जो बुद्धत्व का जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वो भंते जी को बहुत भली भांति समझ गए. And of course he knew a lot about modern culture. और भंते जी को जो आधुनिक संस्कृति है उसके बारे में भी उन्हें जानकारी है. So he expressed the depth of the Buddha's wisdom in terms of contemporary language and terms that were useful for the modern day. और इसलिए बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध की जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को आधुनिक जगत के आधुनिक संस्कृतियों में उन्होंने अभिव्यक्त किया, उसको अनुवादित किया. He wasn't translating particular ideas and sentences. तो एक विशिष्ट जो कल्पना है या वाक्य है उसका उन्होंने भाषांतर करके अनुवाद किया. He was translating the depths of the Buddha's wisdom. तो बुद्ध का जो ज्ञान की जो गहराई है उसको उन्होंने आधुनिक इसमें अनुवादित किया. And he said a big part of his mission in life was to be a translator in this deeper spiritual sense. और हम कह सकते हैं कि भंते जी के जीवन का अधिकांश भाग या यही था कि उन्होंने उस ज्ञान को आधुनिक जगत में रूपांतरित किया, उसे अनुवादित किया. And he was fascinated by the whole idea of translators like Nagarjuna. और भंते जी जो है जैसे जो अनुवादक है जैसे नागार्जुन हो गए, इस तरह के जो भी लोगों ने बुद्ध के तत्वों को उस काल में अनुवादित किया, उनको लेकर वे काफी उत्साहित हुआ. Nagarjuna, who is credited as founding the Madhyamika form of Buddhism, he wasn't copying the words of the Buddha into a different language. और भंते नागार्जुन जो थे, जिन्होंने माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की, उन्होंने बुद्ध के जो साहित्य है वहाँ के शब्दों को अनुवाद नहीं किया. He was taking the depths of the Buddhist wisdom and putting it in a new dress, a new form. और बुद्ध की जो प्रज्ञा की जो गहराई है उसको लेकर नागार्जुन ने उस काल में उस लोगों को बताया. But in the time remaining, I really want to concentrate on verse 4 of this puja. और आज जो भी समय बचा है उसमें इस पूजा का जो चौथा अंग है उसकी ओर मैं ध्यान देना चाहता हूँ. Which refers to 4 gifts. और जहाँ पर जो 4 भेंट वस्तुएं हैं वो बताई गई. And this really is you can only understand this verse if you know a certain poem by Sangharakshita called The 4 Gifts. और ये जो चौथा अंग है वो आप तभी समझ सकते हो यदि भंते जी की 4 भेंट वस्तुएं ये कविता अगर आपने पढ़ी. I think maybe Subhuti might have done some study on this. हो सकता है कि सुबुद्धि ने इसके ऊपर कुछ अभ्यास किया हो. We had a Mitra convention on this in Bodh. Oh, I didn't know. Anyway, here's the poem, The 4 Gifts. तो आचार्य जी जो है वो 4 भेंट वस्तुएं वो कविता पढ़ने आ रहे. I come to you with 4 gifts. मैं आपके पास 4 भेंट वस्तुएं लेकर आया हूँ. The first is a lotus flower. पहली है कमल पुष्प. Do you understand? क्या आप समझते हैं? My second gift is a golden net. मेरी दूसरी भेंट वस्तु है सुवर्ण जाल. Can you recognize it? क्या आप उसे पहचान सकते हैं? My third gift is a shepherd's dance. मेरी तीसरी भेंट वस्तु है चरवाहों का नृत्य. Do your feet know how to dance? आपके पैरों को मालूम है किस तरह से नृत्य करना. My fourth gift is a garden planted in the wilderness. मेरी चौथी भेंट वस्तु है रेगिस्तान में बगीचे को निर्माण करना. Could you work there? क्या आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं? I come to you with 4 gifts. मैं आपके पास 4 भेंट वस्तुओं के साथ आया हूँ.
day you accept them. आपको उसे स्वीकार करने की हिम्मत है। So you might have studied these before, I didn't know, but it won't do any harm to remind ourselves of these 4 gifts. तो हो सकता है कि इसके पहले आपने 4 भेंट वस्तुओं के बारे में सुना होगा, उसका अभ्यास किया होगा, और अगर हम उसको यहाँ याद करते हैं या उसके बारे में हम कुछ बोलते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। So we're all familiar with the first gift, which is the lotus flower and a symbol of spiritual growth. तो पहला जो गिफ्ट है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, कमल पुष्प, और कमल पुष्प ये हमारे आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। And it unfolds into space, into the sunlight. और जो कमल पुष्प है वो अवकाश में खिलता है और सूर्य प्रकाश में खिलता है। The other 3 symbols I don't think you find in traditional Buddhism, but you do this first one. तो जो परंपरागत बुद्ध धर्म है उसमें बचे हुए जो 3 जो प्रतीक है वो नहीं दिखाई देते, लेकिन कमल पुष्प वहाँ पर दिखाई देता है। And of course, Bhante Sangharakshita gave us the gift of the spiritual path of the unfolding lotus very beautifully. और भंते जी ने ये खिलते हुए कमल का जो प्रतीक है वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सुंदरता से हमें सिखाया है, दिया है। As we know, his teachings are very clear. और हम सभी लोग जानते हैं कि भंते जी की जो शिक्षा है वो काफी स्पष्ट है। He didn't like confused thinking. भंते जी जो संभ्रमित ऐसे विचार है उसको वो पसंद नहीं करते। He used to sort of say, well, it's the enemy of spiritual development if your thinking is confused. भंते जी कहते हैं कि आपकी अगर विचारधारा, अगर आपका चिंतन संभ्रमित करने वाला है तो वो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए नुकसान देगा। And I think what he's given us in terms of the lotus flower, it could only be possible by somebody who's a brilliant scholar and deeply involved in spiritual practice themselves. और भंते जी ने जो हमें कमल पुष्प का की जो भेंट दी है वो उसी व्यक्ति को संभव हो पा रही होती कि जो एक बहुत ही बड़े विद्वान है और उतने ही आध्यात्मिक गहराई का भी उन्होंने अनुभव लिया, जिसे भंते जी ने के साथ में बातें की। When he was young, he just saw a lot of contradictions between the different forms of Buddhism. और जब भंते जी युवा थे तब उन्होंने अलग-अलग बुद्ध धर्म के जो पंथ है उनमें बहुत सारे विरोधाभास उन्होंने देखे थे। And he could see that a lot of what was called Buddhism wasn't really effective spiritually. और जो बुद्ध धर्म कहा जाता था तो उन्होंने इसका अनुभव लिया है, पर उससे कुछ आध्यात्मिक विकास हो रहा ऐसी वो परंपरा या बातें नहीं थी। Part of the contradictions was just due to the fact that over hundreds of years Buddhism had developed into very different forms. और एक विरोधाभास ये भी था कि शतकों की बौद्ध धर्म की परंपरा में बुद्ध धर्म अलग-अलग रूपों में विकसित हो गया। A few hundred years ago, people from Europe used to travel around Asia. They went to China, Sri Lanka, northern India, where they met Tibetan Buddhism, and they saw the different types of Buddhism, but they had no idea it was the same religion. और पिछले कुछ शतकों में लोग यूरोप से चीन में जाते थे, जापान में जाते थे, कभी तिब्बत में जाते थे और वहाँ पर अलग-अलग बुद्ध धर्म के रूप को देखते थे और उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये सारा एक ही बुद्ध धर्म का रूप है, एक ही बुद्ध धर्म सबका आचरण सब लोग करें। So for them it was a big surprise when they found that all these different forms could be traced back to a single religious figure, the Buddha. और इसलिए उनको ये समझ में नहीं आता था कि हर जगह जिस तरह से बुद्ध धर्म का आचरण कर रहे थे लोग, उसका मूल जो है वो एक ही व्यक्ति में है, वो है ब्रह्म। And part of the confusion generally in the Buddhist world was just due to misunderstandings that had grown up over the centuries. और कुछ जो संभ्रम है, वो जो संभ्रम है शतकों के विकास के साथ में बुद्ध धर्म विकास के साथ में वो संभ्रम भी विकसित होते चले गए। And bit by bit, year by year, over Sangharakshita's life, he sorted out all the confusion. और भंते जी ने उनके पूरे जीवन काल में ये जो भी अलग-अलग परंपराओं के अलग-अलग तत्वों को लेकर जो संभ्रम थे, उन एक-एक संभ्रमों को निपटाने में, उसको सुलझाने में उन्होंने
he was able to see which bits were in accord with the spirit of the core original Buddhism. और भंते जी ने इसे गहराई से देखा कि इसमें से कौन सा तत्व, कौन सी जो बात है वो बुद्ध धर्म के मूल चैतन्य से, मूल प्रेरणा से संबंधित, and which bits were not in the same spirit. और ऐसी कौन सी जो बातें परंपरा है कि जो बुद्ध धर्म के मूल तत्वों के साथ में या मूल प्रेरणा के साथ में नहीं. And out of all this, he produced a very clear way forward, a clear path, a clear, beautiful lotus for us. और ये सब संभ्रम को नष्ट कर भंते जी ने हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सरल आगे बढ़ने के लिए मार्ग जो हमें दिया है, हमारे कमल को दिलाने के लिए बहुत ही स्पष्ट धम्म उन्होंने हमें दिया. It was extraordinary how he was able to draw on the best from many different traditions. और ये देखना बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अद्वितीय ऐसी बात है कि हर परंपरा में से जो सर्वोत्तम है, उन सर्वोत्तम को लेकर भंते जी ने हमें धर्म दिया. The other famous Buddhist teachers who came to the West at that time, they just stuck with the one tradition they'd come from Asia. और उस समय में जो बहुत दूसरे जो आचार्य हैं, जो पश्चिम में है, तो जिस परंपरा से वे गए थे उसी परंपरा को वो चिपके रहे. And it was also extraordinary that he didn't just copy certain methods, he introduced new things that weren't found in traditional Buddhism. और ऐसी बात नहीं कि भंते जी ने जो परंपरागत जो पद्धति है, उन परंपरागत पद्धतियों को कॉपी किया, उसे पश्चिम में सिखाया. उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई कि जो परंपरागत बुद्ध धर्म में नहीं थी, वो उनकी स्वयं की देन है, उन्होंने स्वयं उसे विकसित किया. For instance, his emphasis on friendship and the arts. उदाहरण के तौर पर मित्रता के ऊपर दिया गया उनका जोर, या कला के ऊपर उनका दिया गया जोर. So the lotus flower he's given us is quite unique. और इसमें भंते जी ने जो हमें कमल पुष्प दिया है, वो एक अद्भुत ऐसा कमल पुष्प है, एकमेव ऐसा कमल पुष्प. So then the second gift, a golden net. दूसरी भंते जी की जो भेंट वस्तु है वो है सुवर्ण जाल, गोल्डन नेट. Now, I don't know what Subhuti said, but I think the image of a golden net is supposed to convey a sense of the human condition. तो सुबुद्धि जी ने क्या बताया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हम सुवर्ण जाल की बात करते हैं तो हमारे व्यक्ति का, इंसान की जो परिस्थिति है उसे वो प्रदर्शित करते हैं. As we all know from our earlier study, the human condition is usually kind of expressed in terms of the wheel of life and the spiral path, the spiritual path leading towards freedom. तो जो मानवीय अस्तित्व है, वो मानवीय अस्तित्व को तो भवचक्र जो कि चक्राकार मार्ग है उसमें, या ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है, इसमें मानवीय अस्तित्व को दर्शाया जाता है. But in this verse, this part of the poem, Bhante says, I give you a golden net, but can you recognize it? तो दूसरे गीत में भंते जी कहते हैं कि मैं आपको सुवर्ण जाल, गोल्डन नेट देता हूँ, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? In other words, he's saying, do we really see that ordinary life is just going round and round, not really going anywhere? तो भंते जी ऐसा भी कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सामान्य जीवन होता है, वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, हम वहीं पर चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं. Do you really see that there's a possibility of escape, of movement towards Lokuttara? और भंते जी कहना चाहते हैं कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि चक्कर से भी निकला जा सकता है, वहाँ पर ऊपर बढ़ने का भी एक मार्ग है. So to me, the image of a net does convey something similar to the image of a wheel that just goes round and round and doesn't take you anywhere. तो जो नेट की जो कल्पना है, उसकी जो प्रतीक है, वो मुझे थोड़ा जो भवचक्र है, जो चक्र है, उसके प्रतीक से समर्पित है, उससे जुड़ा हुआ लगता है, जो गोल गोल वहीं पर घूमते रहते हैं. Because in a net, you lose your freedom. You just can't move around. क्योंकि जब हम जाल में रहते हैं, तब हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देते हैं, हम आगे नहीं घूम सकते. But this is a golden net, a magical net. लेकिन ये जो जाल है, ये सुवर्ण जाल है, ये जादू का जाल, जादुई जाल.
expand more and more and eventually disappear. ये जो झाड़ है ये विकसित होते चले जाता है, ये विस्तारित होते चले जाता है और अंततः वो लुप्त होता है. So this is Bhante's second gift to us. और ये मंदिर का हमारे लिए दूसरी भेंट वस्तु है. Then there's the shepherd's dance. और फिर तीसरे है जो चढ़वा होते हैं अपन मराठी गुजराती उनका. Actually, I'm not sure that I've ever seen a shepherd's dance. अब मुझे नहीं लगता कि मैंने अचल जी में शेफर्ड डांस देखा है. But what I can say, it's a dance in rhythm. Everybody's in rhythm. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चढ़वा होते हैं वो नृत्य करते हैं, तो हर व्यक्ति एक ताल में नृत्य करते हैं. And it's a dance people do together. और ये ऐसा नृत्य है जो सब लोग एक साथ करते हैं, मिलकर करते हैं. So it's said that joining the order or even becoming a Dhammamitra is a bit like joining a dance. और भंते जी कहना चाहते हैं कि जब आप संघ के सदस्य बनते हैं या धम्ममित्र भी बनते हैं तो आप इस डांस में को ज्वाइन करते हैं, उसमें एक सदस्य बन जाते हैं, घटक बन जाते हैं. It's active, it's moving, and it's harmonious. तो वो रुचिशील है, वो चल रहा है और महत्वपूर्ण वो सब एक ताल में सब नृत्य कर रहे हैं. So a shepherd's dance is one way of looking at the Triratna community. तो जो त्रिरत्न संघ है उस संघ को देखने को हम कह सकते हैं कि एक चरवाहों का संघ है. So he's given us this gift. We can dance together just to create a better world. तो भंते जी ने हमें जो संघ दिया है उस संघ में साथ में मिलकर एक साथ मिलकर हम नृत्य कर सकते हैं ताकि हम बेहतर दुनिया को बना सकें. But how difficult it was for him to create the Triratna community. अब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना करना भंते जी के लिए कितना मुश्किल काम था. If you're a new order member, it's very hard for you to imagine just how difficult it was when you start from nothing. तो अगर आप नए ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारिणी हो तो ये समझ पाना कि भंते जी ने कुछ भी नहीं किया, संघ का कोई अस्तित्व नहीं था, वहाँ से इसे कैसे निर्माण किया होगा तो समझ पाना बहुत मुश्किल है. First of all, he had to decide what was the most appropriate form of diksha. सबसे पहले तो भंते जी को इसके बारे में बहुत चिंतन करना पड़ा, सोचना पड़ा कि मैं मेरी जो दीक्षा विधि है, संघ की जो दीक्षा होगी वो दीक्षा विधि कैसे होगी. And of course, we know our form of diksha is based on spiritual commitment, not on obeying certain rules. और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संघ दीक्षा है वो हमारे त्रिरत्नों के प्रति शरण नमन या प्रतिबद्धता से संबंधित है. किसी भी बाकी जो नियम उन नियमों को या जीवन पद्धति से संबंधित है. So all that way back in the 1960s, he had to see very deeply that this was totally consistent with the Buddha's teaching and it was what the world needed. और 1960 के दशक में भंते जी इसको देख सके कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से बुद्ध के मूल जो चैतन्य है उसके संबंधित है और आज दुनिया को किसी बात की जरूरत है. And starting from nothing, it would have been incredibly difficult to develop the community, to nourish it. और जब मैंने पहले कोई भी वातावरण नहीं था कि तो भंते जी ने शून्य से निर्माण किया, तो उस वक्त संघ को निर्माण करना, उसके सदस्यों को निर्माण करना, उनको पोषित करना, उनको हर चीज सिखाना ये बहुत मुश्किल काम. It's as if he was a gardener and he had a seed of a species that never existed before and he planted it. तो ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं कि भंते जी एक कुशल ऐसे गार्डनर थे, माली थे और उन्होंने उस पौधे को, उस पेड़ के बीज को बोया था जो इसके पहले कभी भी अस्तित्व में नहीं था और उस बीज को उन्हें सींचना. But he had to nourish it, he had to water it, he had to make sure it grew. और भंते जी को इसकी पूरी खातिर करनी थी कि उस बीज को उन्हें पानी देना था, उस बीज को उन्हें खाद देना था, उस बीज के सही तरीके से वो पेड़ उगे, उसका विकास हो, वो उन्हें देना. In the early days, he was a personal friend to every single order member. जब संघ की शुरुआत हुई उस वक्त जो भी धर्माचार्य थे वो सब धर्माचार्य के भंते कल्याण करते या उनके व्यक्तिगत भी मित्र थे. Even the ones that gave him trouble. और
जिन लोगों जिन्होंने भंते जी को तकलीफ दी उनके लिए वो पूरी तरह। He had a lot of maitri. भंते जी के मन में बहुत ही अगाध ऐसी मैत्री थी, A lot of patience. बहुत शांति थी, सहनशीलता थी। And of course we were hungry, we wanted the Dhamma, so he was giving us really good Dhamma too. और हम बहुत ही लालायित बहुत ही भूखे थे, हमें धम्म चाहिए था और भंते जी ने हमें वो धम्म दिया। And he also had very good organizational skills. और भंते जी के पास में संगठनात्मक कौशल्य भी गजब का था। So many things had to be worked out along the way. और संघ के इस निर्माण के कार्य में बहुत सारी जो बातें हैं वो बातों का नियोजन करना था। Most of you probably have no idea what it was like to be in the Triratna without a Dhammamitra system. आप लोगों को अभी इसकी कोई कल्पना नहीं होगी कि जब त्रिरत्ना बौद्ध महासंघ में धम्ममित्र की पद्धति नहीं थी, उसको संघ कैसे कार्यरत रहा होगा, उसका कैसे कैसे कार्यरत था। Or without order chapters. या शुरू में ब्रह्मचर्य संघ नहीं हुआ करते थे, चैप्टर्स नहीं होते थे। All these things had to be worked out. तो ये सारी चीजों का जो है इन सारी चीजों को विकसित करने में। And he guided us all along the way. और जो भी ये पूरा अपने विकास का जो मार्ग था, भंते जी ने हर पल पर हमें मार्गदर्शन किया। But many years before he died, he was also, as well as guiding us, he was thinking about how he can hand over responsibilities after he died. लेकिन संघ का संगोपन संरक्षण करते हुए या बागवान के तरफ अपने बगीचे की देखभाल तो उन्होंने बहुत भली भांति की, लेकिन मृत्यु के कई साल पहले वो इस बारे में भी उन्होंने सोचा कि मेरे जाने के बाद संघ का क्या होगा, तो उसकी भी उन्होंने उसका भी नियोजन करते। And because of all of that, we can be very sure that the Triratna is going to flourish going forward. और भंते जी के बाद में संघ का क्या होगा, इसका नियोजन भी उन्होंने बहुत सालों से के पहले से करना शुरू कर दिया था, इसलिए अभी पूरा विश्वास है कि उनके बाद भी संघ जो है वो विकसित होते रहेगा। So thank you Bhante for this third gift, the shepherd's dance. और भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें जो चरवाहा का नृत्य जो है उसका जो गिफ्ट दिया है। Of course, it's impossible to even imagine all the benefit of the Triratna community to the wider world. जो बाह्य जगत है, उस जगत को संघ की वजह से कौन से फायदे हो रहे हैं होते हैं, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। But everybody here in this room also needs the Triratna community for yourself, for your own spiritual practice. और हम सबको मालूम है कि जो त्रिरत्न संघ है या अपना जो संघ है अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक आचरण के लिए संघ की जरूरत है। If each of us want to transform ourselves, we need to do more than just pay attention to our personal sheel and our personal meditation. That's never going to be enough. तो यदि हमें ऐसे लगता है कि मुझे खुद बहुत विकसित होना है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, तो केवल मैं मेरे शीलों के बारे में ध्यान दूंगा, मैं स्वयं के आचरण के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करूंगा, ऐसा करने से हम संभव नहीं कर पाएंगे। It's never going to be enough just worrying about our own personal mental states. केवल हम स्वयं की जो मानसिक स्थिति है उसकी चिंता करने लगे, तो उससे हम ये संभव नहीं कर पाएंगे। What we need is teams of people, teams of friends working together. तो हमें लोगों की या दो मित्रों की ऐसी छोटे-छोटे टीम चाहिए कि जो साथ में मिलकर इस कार्य को करें। Dhamma Sevaks going shoulder to shoulder. तो हमें धम्म सेवक चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। Working for something that's greater than your own needs. और हमारे व्यक्तिगत जरूरतों से भी ऊंची ऐसी कोई जो बात है उसके लिए हम काम करें। And this is what the Triratna community provides us when we dance. This is what the dancing is. और जब हम साथ में मिलकर नृत्य करते हैं उस वक्त त्रिरत्ना बौद्ध महासंघ हमें वो मौका देता है कि हम वो कर सकें। And of course we still got some ego. अब निश्चित ही हमारा अभी भी हमारे में अभी भी कुछ अहंकार है। And when we start dancing, particularly dancing intensively, we start to feel some ill will sometimes. और जब हम नृत्य करने लगते हैं और जब हम अपने रंग में आ जाते हैं तो उस इसमें हमारे मन में कुछ द्वेष भी निर्माण होता है।
and overcoming our grudges, overcoming our ill will is part of our spiritual practice. It's part of our dance. और हमारे मन में जो स्पर्धा भाव है, जो द्वेष की भावना है, तो वो द्वेष की भावना के ऊपर उठना और डांस करते रहना, वो सब उसी डांस का एक हिस्सा है. So dancing in the Triratna is a wisdom practice. और अगर त्रिरत्न में हम डांस का जो आचरण कर रहे हैं, वो एक प्रज्ञा का आचरण है. But the poem says, I've given you the shepherd's dance, but do you know how to dance? और कविता में कहते हैं कि मैंने आपको चरवाहों का नृत्य कैसे करना, वो गीत तो दी है, लेकिन क्या आपको नाचना आता है? Can you do it without treading on other people's toes? और दूसरे लोगों के पैरों पर पैर देते हुए क्या डांस कर सकते हैं? If we've got a very big ego, we'll probably end up tripping people up. और अगर हमारा खुद का अहंकार बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या दूसरों को चाट मारने लगेंगे, उनके पैरों पे पैर देने लगेंगे. And I have to say, if we get too addicted to smartphones and the internet, we won't have the focus and concentration to dance properly. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंटरनेट और स्मार्टफोन इसमें हम अगर ज़्यादा उसकी अगर हमें लत लग गई, तो फिर हम बाकी लोगों के साथ में मिलकर डांस नहीं कर पाएंगे. Okay, fourthly, a garden in the wilderness. और चौथा जो गिफ्ट है वो है रेगिस्तान में बगीचा खिलाना. A wilderness is a metaphor for the state of the whole world. और यहाँ पर जो रेगिस्तान है, जो उजाड़ भूमि है, वो इस संसार के प्रतीक के रूप में उसे लिया है. The world's in a bad way. जो दुनिया है उसमें बहुत दुनिया की स्थिति बहुत बुरी है. Environmental problems. वहाँ पर वातावरण की समस्या है. A lot of big countries, including India, have nationalist governments. और बहुत सारे जो देश है उसमें जैसे भारत भी सम्मिलित है कि वहाँ राष्ट्रवादी ऐसी सरकारें हैं. There's warfare. वहाँ पर दुनिया में युद्ध होते हैं. In America, the expenditure on nuclear warfare is going up. और अमेरिका में अणु बॉम्ब के ऊपर है, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है. And then there's just materialism, where people are so concerned about their own luxury and not so concerned about the poverty around them. और जो भौतिकवाद जो है, उपभोक्तावाद है, वो इतना बढ़ रहा है कि लोग जो है खुद के सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, दूसरों को मदद करने के बारे में नहीं सोचते. And at the bottom of all these problems is the fact that relatively few people are really practicing spiritually. और इसके गहराई में हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आध्यात्मिक आचरण करने वालों की संख्या बहुत कम है. So the Triratna order and the Triratna community isn't the only group that's trying to live according to spiritual values. तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ यह केवल एकमात्र ऐसा संघ नहीं है जो आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर जीवन जीने का प्रयास कर रहा है. Yet the fact remains is that the world outside is a jungle. और यहाँ पर एक वास्तविकता रहती है कि जो बाहरी जो दुनिया है वो एक जंगल के जैसे. It's a jungle, but this is where we live, this is where our body is, and it's the only world we've got. और भले ही ये जंगल हो, लेकिन इसी जंगल में हमें रहना है, अपना शरीर उसी जंगल में रहेगा, क्योंकि यही दुनिया फिलहाल अपने लिए उपलब्ध है. So Bhante's given us a nice garden, a rich, fertile garden within the wilderness. और इसलिए भांते जी ने इस जंगल में या इस उजाड़ भूमि में हमें एक बहुत ही सुंदर ऐसा बगीचा जो है वो दिया है. Groups of practitioners in the order chapter or other circles who are bonded in friendship. तो जो छोटे-छोटे जो समूह हैं शास्त्र के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से, वो जो छोटे समूह हैं वो फ्रेंडशिप से एक दूसरे से जुड़े हैं, वहाँ पर वो आचरण कर रहे हैं. Have a common shraddha. हमारी सबकी जो श्रद्धा है वो एक ही है. Live in kindness and shanti. तो हमारे बीच में मैत्री है, करुणा है, शांति है. So this is what we have, and we can be very grateful for it, because it enables us to keep going. और हमें ये सब कुछ मिला है, ये सब बातें हमारे पास में है, और ये हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार सिद्ध हो. So that's a very quick summary of the lotus flower, the golden net,
the shepherd's dance, and the garden in the wilderness. तो इसलिए जो कमल पुष्प है, सुवर्ण लाल है, चरवाहों का नृत्य है, और रेगिस्तान में जो बगीचा है उसको एक संक्षिप्त ऐसे मैंने उसकी आपको व्याख्या की। So I'm going to finish this talk with a different line from the puja. तो पूजा में जो बातें कही है उससे कुछ अलग हटकर मैं बताने वाला है, उससे आज के इसका समापन करने वाला हूं। The puja says, from Sangharakshita, we've gained a greater appreciation of beauty and art. और पूजा में लिखा गया है कि भंते आपसे ही हमने सीखा है कला और जो संस्कृति है उसको प्यार करना। He loved the beauty of nature. भंते जी जो है निसर्ग की जो सुंदरता है उसे वो बहुत प्यार करते थे। Very deep appreciation of the arts. जो कला है उसको बहुत गहराई से उसकी प्रशंसा करते थे। The arts in all their forms, music, architecture, poetry. और भंते जी को भी वो सभी रूप जो है, सभी जो कला है, वो कविता हो, संगीत हो, स्थापत्य कला हो, हर कला भंते जी को अच्छी लगती है। And of course he wrote quite a lot of poems himself. और भंते जी ने स्वयं भी बहुत सारी कविताएं लिखी। And these poems sometimes express spiritual experiences that are much nicer to hear in poetry than they are in intellectual philosophy. और जो तत्वज्ञान की भाषा में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसकी तुलना में जब भंते जी कविता में वो बात बताते हैं तो वो तत्व सुनना या समझना हमारे लिए बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा लगता है। So I'm going to end with a small selection of his poems. तो इसलिए आज जो मेरे भाषण है उसको मैं भंते जी की कुछ कविता पढ़कर उसका समापन करने वाला हूं। We had them the other night at the Mahendranagar Centre, but there's no harm to hear a good poem many times. तो कुछ शाम पहले महेंद्रनगर में भी इन कविताओं को पढ़ा था, लेकिन अच्छी कविताएं बार-बार पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। That's one of the remarkable things about poetry. It nurtures you again and again and again every time you go back. और कविता की एक विशेष बात ऐसी है कि उनको जितने बार पढ़ोगे उतने बार हमारा पोषण। So I'm going to read it in English, and then we're going to have a rough translation in Hindi. तो अक्षर जी जो है उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं उसका एक हिंदी में उसका एक रफ ट्रांसलेशन, मैं कवि नहीं हूँ तो उसको जो शब्दों मैंने अनुवाद किया। First one's called meditation. So, first one's meditation. Here perpetual incense burns, the heart to meditation turns, and all delights and passions spurns. 1,000 brilliant hues arise, more lovely than the evening skies, and pictures paint before our eyes. All the spirit's storm and stress is stilled into nothingness, and healing powers descend and bless. Refreshed, we rise and turn again to mingle in this world of pain, as on roses falls the rain. अगरबत्ती की खुशबू, शांत मन, हजारों रंग, सभी सांसारिक दृश्यों से अधिक सुंदर। तूफानी बादल शांत है, हमारा शरीर उपकृत, हमारे मन के भाव भर गए। हम ध्यान से उठे, तब हम दुनिया से मिले, जैसे गुलाब के फूल बारिश की बूंदों से। The second one's called Remembering the Retreat, and it's referring to several days that Bhante spent with a friend in a small little hut, in a very simple sort of retreat. दूसरी कविता है एकांतवास, जब जो भंते जी ने उनके मित्र के साथ में एक छोटे से झोपड़ी में उन्होंने कुछ दिन बिताए थे, उसकी याद दिलाई। At the wood's edge, a solitary hut, sharing my quiet room, a single friend. Here on the table, 2 or 3 books of verse,
there on the shelf, half a dozen frost-blackened violets. Hour after hour, we exchange only a few words. Day after day, I polish a single poem. Who would have thought it? A whole world of content found in these things. एक शांत कुटिया जंगल के किनारे केवल मैं और मेरा टेबल के ऊपर कुछ मुरझाए फूल और कविताओं की दो किताबें। हम घंटों बैठते, हम चंद शब्द ही बोलते कई दिनों तक। मैं एक ही कविता को सुधार रहा हूँ, मुझे उसमें खत्म करने की कोई जल्दी नहीं। इन सरल बातों में बहुत आनंद है, ये लोग कैसे समझें? The third one's called The White Calf, and it expresses Bhante's spontaneous Maitri. जो तीसरी कविता है वो है सफेद बजरा वाइट काफ, और उसमें भंते जी की जो मैत्री उनकी विकसित हुई थी उसकी भावना को दिखाती है। His Maitri wasn't forced. उनकी जो मैत्री थी वो जबरदस्ती लाई गई मैत्री नहीं थी। And the poem's talking about the time when he was a wanderer going from village to village on foot with his friend. और ये जो घटना है ये तब की है जब भंते जी उनके मित्र के साथ में गाँव पैदल ही चला करते थे। The White Calf. तो सफेद बजरा थकान भरे दिन के बाद हम रेतीले जमीन पर लेट गए, पेड़ के नीचे शांत। अंधेरे में हमने तारे देखे, पेड़ की शाखाओं में से पूर्णचंद्र। जल्दी नींद आ गई, लेकिन अचानक हम जाग गए। तारे छिप गए, बारिश आ गई, पेड़ हिल रहे। एक छोटे मिट्टी के झुपड़े में हमने सूखी घास का बिस्तर बनाया। वहाँ बिजली की गर्जना सुनते लेट गए और फिर से हमें नींद आ गई। मैं सुबह जल्दी उठा, तूफान गुजर गया था, सूरज की किरणें तेजस्वी खुले दरवाजे से चमक रही। मेरे बाजू में घास पर मैंने एक छोटे सफेद गाय के बछड़े को लेटा हुआ था, बहुत शांति से सोते हुए। उस छोटे से जीव के लिए मैंने बहुत प्यार अनुभव किया, जैसे माँ करती है अपने अबोध बच्चे के लिए। और तब मैं समझा, एक स्पष्ट क्षण में वैश्विक बंधुत्व के रहस्य। So I said Bhante loved nature. जैसे मैंने कहा कि भंते जी जो है वो उन्हें प्रकृति बहुत पसंद थी, नेचर बहुत पसंद थी। And of course, when we go out into nature and enjoy it, it changes our mental state. और जब हम बाहर जाते हैं, निसर्ग की खूबसूरती देखते हैं, तो उससे हमारी मनस्थिति बदल जाती है। Sometimes we go out feeling like we've got the weight of a world on our shoulders. कभी हम जब बाहर जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंधों के ऊपर बहुत संसार का बहुत बड़ा बोझ जो है वो है। But then we see the beauty of nature and the problems seem very small. और जब हम निसर्ग की सुंदरता देखते हैं तब जो समस्याएं होती है वो बहुत छोटी दिखने लगती हैं। So the next poem's called Mountains, and it's not just about our problems feeling very small, but how the forces of inspiration are drawn upwards by seeing the beautiful mountains. और ये इसके बारे में नहीं है कि पर्वत कितने ऊंचे कितने बड़े हैं, मैं कितना छोटा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो पर्वत ऊपर जो उठ रहा है उसकी जो ऊपर उठने की जो प्रेरणा है, वो कितनी बड़ी है। Mountains.
golden in laughing sunlight, silver in mist and rain. I see thee, mighty mountains, towering heavenward from the plain, and pray my heart, unmoved by sweet joys or sufferings dire, like thee, through clouds and sunlight, may upwards still aspire. सूरज की आभा में सुनहरे, बारिश और धूम में चांदी से, ओ महान पर्वत, जमीन तट से इतने ऊंचे, मैं उन पर्वतों को देखता हूँ, बादल, धूम और सूर्य प्रकाश में सदा ऊपर उठते, जीवन के खुशी और गम से ऊपर। These are all short poems, but short can be very profound. तो ये छोटी कविताएं हैं, लेकिन छोटी कविताएं भी बहुत ही गहरी हो सकती हैं। The last one. The ashes of all my heartaches, the dust of 100 dreams, are swept away in an instant when forth one white peak gleams. After long storm and struggle, my heart with quietness fills at the curve of this jade-green river, the sweep of these dark blue hills. सौ सपनों का दूत एक क्षण में निकल गया, एक सफेद पर्वत के दर्शन से, उस गर्द हरी नदी को देखकर और उस घने नीले पर्वतों के मोड़ को देखकर मेरा हृदय पूरा खिल गया। So that's all I want to say for the talk. So I thought the next thing we could do is rejoice in Sangharakshita's merits.